इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचना कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Thank you so much, Kanika, for playing the corporate video Franchise India. Good afternoon, everyone. Franchise India team welcome all of you to our business opportunity with Chai webinar series. This is a specially designed webinar for all our investors so that they digitally interact with our investors, understand their business model, and talk about the business proposition they are creating in market. This is a 45-minute session. First, we'll invite the brand founder and the leadership team to share their presentation, talk about the brand, then we'll move towards a panel discussion. We welcome management team of Franchise India, 𝐂𝐿𝐼 sir and Sonia ma'am. We also welcome our very senior resource from our Gujarat team, Mr. Saurabh, will be participating in our panel discussion. And the business opportunity which we are representing today comes from the education vertical. 𝐂𝐮𝐬 Education is the brand for you. They're presenting two different kind of the business opportunity for you under the umbrella, Curious Kids as well as Precademy. And today we have invited Mr. Sanjay and Mr. Ashok to talk about this brand. Thank you so much, Sanjay ji. Thank you so much, Ashok ji. आज हमें join करने के लिए आपका स्वागत है. We welcome all of you on behalf of Franchise India. We request you to start with the presentation, sir. Over to you, Sanjay sir. Yeah, good morning, everybody. Myself, Dr. Sanjay, chairman of 𝐂𝐮𝐬 Education Private Limited, and I'm dealing with the school education since last 21 years. Basically, I would like to introduce myself first because professionally, I am a gynecologist. I am practicing in Maharashtra, Parbhani district since last 27 years. And because of the local need and to give the English medium education for my son, I started my Prince Academy campus here in Parbhani district of Maharashtra. And then I developed passion in this education field. Yeah. And afterwards I developed the 14 acres of campus. Now I am having about 3,500 students studying in my campus here with diploma engineering college, B.Ed college, D.Ed colleges, one Marathi medium school, one state board English medium school, one CBSE school, and residential schools also. And moreover, I was giving the preschool education since last 21 years. But even for that also, being a leading brand in my area, I was not quite happy with the type of education what I was giving previously.
So that's why I go on searching for the different type of education systems in the world, and I found that Finland is the one of the best education system in the world, and it is a activity based learning is there in that particular system. So I personally contacted with few people from Finland, and I invited them here in my school. We had a long discussion with activity-based learning, and we kept one workshop also in Marathwada regional level workshop. So after that, those people were impressed with what activities we are giving in my school, and they invited me for Tampere conference in Finland. So in 2015, I went to Finland and attended the conference over there. I presented my school in that international conference. About 27 countries participated in that conference, including America, Russia, Japan, France, and many developed countries. So I got a nice opportunity for interacting with educationalists in that conference. And moreover, after few days, I again visited Singapore, where the conference was arranged by Ministry of Education of Singapore. And the topic was development of 21st century leadership for English mediums schools. So school leadership. So I attended that conference, and there I met Annapurna Lakshmi. She was working previously at Gulf countries for more than 25 years, and she was working as a principal over there. So I met with her. We had interaction with this education system and the concept of EYFS, that is early year foundation stage. And I was really impressed with that concept. And there only I finalized that I should start my school based on this EYFS concept. So this is in short the history of the Finland background and the connection with the Finland for my Curious Kids and my Prince Academy. So there at Finland, I personally visited many schools, junior colleges and preschools also. And then I really impressed with the activity based learning over there. And I got the opportunity to attend the classes also in that school. There in Finland, the entire system is under government control. So no private schools are there. And the infrastructure is so huge for each school, and so disciplined, so fantastic, so innovative, that every school means like a five-star hotel, you can say. So that type of best education qualities those people are providing in Finland. So I really inspired with that type of education system. And then I've contacted few people from different countries and different cities, metro cities from India also. And then I developed my world standard curriculum of Curious Kids. So this is in short about the history of my Curious Kids brand. Now I have developed here a fantastic, I can show you the So this is so welcome to the Curious Kids Preschool presentation here. I will take
Sanjay sir, we can't hear you. You want me to help with the presentation? Sir, can we check with Sanjay ji? He is on mute. Yes, ma'am. I'm just. Sanjay sir, we can't hear you. You Friends, we are sorry for the inconvenience. Sanjay sir, yeah. Sanjay sir, I'm sharing the screen for you. Just let me know when to go next. In that, Sanjay sir, I'm sharing the screen for you. You have to just unmute yourself. I'm sharing the screen for you for the both the PPT. okay. Hope you are able to see the screen, PPT on your screen. Is it okay now? Can you hear me? Yes, sir. Please go on. Okay. So, next slide, no, please. Next slide, please. So this age group is very important because the child's brain develops rapidly during the first 5 years of life. It is a time of rapid cognitive, linguistic, social, emotional, and motor development. And 75% of brain development occurs after birth, and 90% of the brain development happens before the age of
Next slide, please. So we have developed such activities that are similar to the Finland pattern, and we follow the concept of EYFS and other philosophies like Maria Montessori, Howard Gardner, Reggio Emilia, etc. It is not exactly the same to same we could take from the European and developed countries, because we also believe that Indian parents' mentality is little different. We need some extra writing work also. So for that, we developed our curriculum in such with some extra activities for especially taking in consideration the Indian mentality of parents. So Curious Kids ensures that learning is always fun for the children. We give the children free environment to explore the learn in their own way. In Curious Kids, it is not just about 1, 2, 3 or ABC and colors. It's about developing critical thinking, problem solving, and fine motor skills and cross motor skill development. There is no stress of and no homework also. We are providing home activities. We are giving some YouTube links also. We have developed, our teachers have developed the videos for conducting the activities for the students, and we are sharing that on our app. So it is entirely the students feel that they are just playing, and in that playing they go on learning. So it is unstructured learning in structured manner. Yeah, next slide. So I will like to introduce my academic director, academic manager, 𝐂𝐮𝐬𝐿. So she will introduce you about the Finland activities and all. 𝐂𝐮𝐬𝐿. Hello. 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 Ma'am, please go ahead. We can hear you. हाँ थोड़ा फेवरेट लग रहा है. Okay, so hello everyone. I am Mistress 𝐂𝐮𝐬𝐿. So I will like to introduce and start about academic part. So in this age, you can see we offer the following programs from 2 to 6 years of age. That is playgroup from 2 to 3 years, nursery from 3 to 4 years, Central Junior from 4 to 5 years, and Central Senior from 5 to 6 years. Okay, so next we have our concept map. So as you can see, this unstructured learning in structured manner. So whatever the things, the activities that is conducted in our Curious Kid is structured by a teacher. So it is a play-well method. So the concept map based on Finland Education Pattern. So in this, you can see this is our team. We have actually 4 teams. First, we have KUW. KUW means knowing and understanding the role. And number 4, as you can see. Next, we have this numeracy means, as you know, it is maths. Literacy means English, expressive arts and design. These are our concept map. Ma'am, please next slide. Okay, next we have this observation checklist. As you can see, this is our observation checklist, and we have all the knowledge and understanding the role, literacy, it compiles everything. So now, as you can see, we observe every child performance, and we give the performance. And we have these 3 remarks. And M means net assistant, P means progressing, and M means achieve. So according to the children performance, we give the remarks. So this is our main part of our Curious Kid. So next one. So next we have this Pentagonal System. So we have 5 Pentagonal. The first one we have role play. The second one is curiosity.
corner. As you can see, we have two images. The first image belongs to Finland, and the second one is for Curious Kid. Whatever the activities that is done by Finland, we also conduct the same activity. Next. So next we have this reading corner, music corner, and art corner. These are all the activities that is done in our Curious Kid. Next slide, ma'am. And then this we also have these activities, that is circle time and ball pool area that we use to conduct activities in our Curious Kid. Next slide, ma'am. Next, we also have this sample area and puppet activity that we use to conduct in our Curious Kid as well. Next slide, ma'am. Okay. Okay, next, this is our online class app. We already upgraded in a new way. This one we'll discuss later. Next slide, ma'am. Okay, I will hand over the presentation to our chairman, sir. Next slide, please. So it is a very great opportunity for the people to start a preschool, because 60% of Indian population below the age of 35 years is a huge business potential is there. And 29% of the population in the next 5 years will be below 5 years of age. So that's why the huge beneficiaries you can have in next coming 5 years. So more working women and in increasing number of nuclear families, you will get more number of careful childs also you can get, and everybody wants that the children should get their ward should get education of best quality. Increase in disposable income and rising demand for quality preschool education. Education is the second biggest expenditure after food and grocery of the average middle class households. The market size potential by revenue is 35,000 CR. The compound annual growth rate from 70 to 22 for preschool education is expected to grow by 28.2%. Okay, next. See, this was the potential of the growth in financial year 12. This was in 17, and this is expected in 2020-22. Because after this COVID lockdown, many preschools are already closed, and many will not reopen again, because those who have taken by rent, they have already returned back their property to the landowners, and now they are already engaged in some different activities for their income sources. So there is a huge potential now. It is more potential is created because the schools are going to start and market is opening for the preschools. So this is the right time to fix your preschool brand. And I think my preschool brand, Curious Kid, is definitely best preschool brand you can say. So next slide, please. So these are our franchisees. We have already finalized. Many are there in Pune, Nagpur, then Bid, Maharashtra, then Aurangabad, Parbhani, Nanded, Hingoli district, then at Ahmedabad, at Sabarmati, Chandigarh. Many are in pipeline at Delhi and UP, Gwalior also. One is finalized in Hyderabad and one is finalized in Tirupati too. So this is our the present map of our individual locations for the franchises. Next. Next slide, please.
Next slide. So this is my business model of diamond business model for franchisee. This to offer the franchisees for you. The franchisee fee is very less. It is hardly 3 lakh rupees, and the school fees which we are recommending is around 50,000 per year per student. And so this is, can you enlarge it? So this ROI is given over here. So expenses head and year-wise expenses are already mentioned here. So you will get the ROI within 1 year of your starting of the school, and definitely you will be in profit from very first year. So here it is mentioned that in first year you are getting the profit of around 21 lakh rupees after investing only 7 to 8 lakh rupees here. And second year the expenses will be little more, but you will also have some more students second year. So you are definitely the profit will be more in next year. So more than 20 lakh of profit we are expecting for second year, and more than 22 lakh profit we are expecting for third year of the commencement of the school. The franchisee services what we are providing here are, we can say our curriculum is the world standard curriculum. Then teachers training we are giving. We are also giving the trainings for the school owners also. Then name branding will be there. Teachers appointments we will help in that. Franchisee management software we are providing to all the franchisees. Then interior and exterior designs and landscapings also. Monthly supervision and reporting online for the teachers. The logo, school brochure, banner, designs, etc. we are going to provide you. Then internship of the main 2 teachers at our local site here at main branch with free accommodation to the teachers. So pamphlets we are providing for getting admissions. We will help in digital admissions also. So in one sentence, you can say that even if you don't have any experience of running a preschool, then also definitely we will be supportive for everybody. And if you want to go further ahead for CBSE school after this preschool education, then we are having our next brand, that is Precademy. That is CBSE school franchisee we are offering with the name of Precademy. So can you share that PPT, please? Yes, sir. I'm just sharing it for you. Yes, yes. So because we come up with the CBSE school franchisee also, because many people who took our franchisee of Curious Kids, that is preschool, they were asking that we are interested in more investment, and we need to do our CBSE school also. So for them, we come up with this Precademy brand. And our school, you can say that is the one of the best school what we are running here in Marathwada region of Maharashtra, having about 14 acres of campus here, and about 2.25 lakh square feet construction area what I am having right now with me. So it is a very huge infrastructure, and we are having the experience of about 21 years of running a CBSE school. So we are moreover, you can say, the master in this CBSE school here. Next slide. So this is our vision and mission is there.
Next slide. We offer you the best partnership with us. Definitely, we are the uh, best of the knowledge what we are having right now in running the CBSE school. So we will definitely help you in many different activities of the school. Next. Our goals and objectives will be establish a world-class education research and innovation system at Precademy, set the foundation for the intellectual engaging education of future, create a living laboratory where innovators and pioneers can experiment to develop new technologies and develop academic and co-curriculum program that can be imported. So this is our goals and objectives. The Precademy philosophy is there. Next slide. Next slide. So we help in developing the different labs also. You might have heard about only science lab, but here in Prince Academy or Precademy, we are giving the art and craft lab, science lab, English language lab, math lab, adult tinkering lab, that is robotic lab, e-library also we are giving them. English lab is also there. So different type of lab developments we are doing in our day-to-day learning pattern. Next. So these are the services what we are providing here. That is school infrastructure and project guidance, academic support, staff training and appointing, enrolling admissions, school management support, and parent feedback programs. Next. So we are providing the services like name and branding, interior designing, curriculum selection, teachers recruitment, then trainings, then franchisee management software, mobile app, monthly supervision and reporting online for teachers, banners, pamphlets, etc. Next. This logo and school brochures. We are providing the designs for that, vision and mission formation for your particular school, affiliation guidance for CBSE, budget guidance, guidance in transport, canteen, housekeeping and security, school organization chart with roles and responses, smooth functional plans for daily school operators. Yes, next slide, please. We'll go to the financial slide for Precademy. We are promoting two brands here. One is gold model for Prince Academy, Precademy, and one is diamond model. So Precademy gold model, for the franchisee fee will be just 5 lakh rupees, and we will give you that services according to that particular model. And with Precademy of diamond model, we are providing, we are asking for the franchisee fee of 8 lakh rupees, and the services will be different. Altogether, all the other facilities will be the same, but services will differ definitely with the particular model. Okay, so that's all about my
both the brands, that is Curious Kids and Prince Academy. If you have any doubts, please feel free to discuss with me. Thank you so much, Sanjay ji. And friends, I'd like to thank you all for being with us. I am seeing some questions already in the Q&A box. So मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यू कैन कीप राइटिंग इन द Q&A बॉक्स एंड ये सारे क्वेश्चंस आपसे लिए जाएंगे. संजय जी, बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, एक आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लैरिफाई कर सकते हैं जो हमारा जो प्री प्राइमरी और K-12 का मॉडल है. Definitely. No, I already covered with that, because for Curious Kids, I have given you the diamond model with franchisee fee of 3 lakh rupees, and the material cost required for that particular model is about 4.5 lakh rupees. So in 7.5 lakh rupees, you will be able to start the best school in your area. I already covered that part in gold model of Curious Kids, the diamond model of Curious Kids. For the K-12, संजय जी, K-12 का जो हमारा मॉडल है जो हम बात कर रहे हैं, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया, बट क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी उसकी, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? मेरी जो फ्रेंचाइजी फी, अभी देखिए क्यूरियस किड्स के लिए जब आप फ्रेंचाइजी फी के बारे में सोचते हो तो उसमें 3 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी रहेगी क्यूरियस किड्स के लिए, प्री स्कूल के लिए, और मटेरियल कॉस्ट रहेगी 4.5 लाख रुपीस, एंड इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए 1 more lakh रुपये आपको लगता है. तो अराउंड 8 लाख रुपीस में आपका द बेस्ट स्कूल प्री स्कूल शुरू हो सकता है. एक 1500 से 2000 स्क्वायर फुट एरिया इसके लिए आपको लगता है प्री स्कूल के लिए. और सीबीएसई स्कूल को जब आपको जाना है तो उसके लिए जो बड़े सिटीज है उसमें अभी दिल्ली मुंबई जो सिटीज है उसमें 1/2 एकड़ मिनिमम लैंड लगती है. जो दूसरे सिटीज है उनके लिए 1 एकड़ ऑफ लैंड लगती है. और जो तीसरे 3 टायर सिटीज है उसमें 2 acres ऑफ लैंड इज नेसेसरी फॉर सीबीएसई स्कूल. दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड for CBS according to CBSE norms. So the land cost may differ from city to city, but that much minimum amount is required. And 30,000 square feet minimum construction area उसको लगता है. तो 3 tier cities में उसमें जो कॉस्ट पड़ता है एक 5 CR तक आपको एक बेस्ट स्कूल आप डेवलप कर सकते हो रूरल एरिया में. अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एरिया करना है तो कम से कम 7 CR तो कम से कम लगता है, और मेट्रो सिटीज में करना है तो 10 to 15 CR तक तो मिनिमम कॉस्ट उसका जाता है मेट्रो सिटीज में. लेकिन डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट है उसका मेट्रो सिटीज में फीस इंफ्रास्ट्रक्चर फीस का स्ट्रक्चर रहता है वो भी ज्यादा रहता है, और आपको इनकम सोर्स भी वहां से ज्यादा मिलता है. तो एडमिशन फीस भी ज्यादा रहती है, रेगुलर एकेडमिक फीस भी ज्यादा रहती है, तो डेफिनेटली उसमें इनकम भी आपको मेट्रो सिटीज में ज्यादा ही मिलता है. संजय, जस्ट टू क्लैरिफाई, हम 3 मॉडल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं. हाँ जी, एक हमारा प्री स्कूल मॉडल है, दूसरा हमारा प्री एकेडमी का आपका, इफ आई हैव अंडरस्टूड राइट, हमारा कोचिंग मॉडल है जहाँ पे K-12 तक ऑनलाइन क्लासेस कोचिंग बच्चों को दी जाती है, राइट. एंड तीसरा जो हमारा मॉडल है वो हमारा K-12 का है जहाँ पे हम स्कूल सेट कर सकते हैं, और एक हमारा प्राइमरी स्कूल का मॉडल है जहाँ पे हम 5th क्लास तक एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे K-12 की इन्वेस्टमेंट हमारे तकरीबन 7 करोड़ की है, राइट. हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स प्री स्कूल की है वो तकरीबन आपकी 8 लाख की है, इंक्लूडिंग द इंटायर इन्वेस्टमेंट जो आप मटेरियल में लगाएंगे, इंटीरियर्स में लगाएंगे, फ्रेंचाइज फीस में लगाएंगे, ऑल पुट टुगेदर 8 लाख में एक प्री स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका रिक्वायरमेंट आपका 1500-2000 स्क्वायर फीट बहुत बढ़िया का स्कूल. हाँ जी. एंड संजय जी, इसमें जो हमारा प्राइमरी का है उसमें क्या हमारा तकरीबन इन्वेस्टमेंट रहता है प्राइमरी स्कूल के लिए जो रिक्वायरमेंट है? क्योंकि प्राइमरी लेवल तक कैसा है, सीबीएसई स्कूल का एफिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है. सीबीएसई का एफिलिएशन 9th and 10th के लिए रहता है, राइट. तो इसलिए अप टू 8th स्टैंडर्ड यू कैन स्टार्ट विद गवर्नमेंट परमिशन. गवर्नमेंट परमिशन तो लगती है,
लेकिन 1 to 8 तक सीबीएसई का परमिशन ऐसा नहीं रहता है एफिलिएशन, उनका एफिलिएशन डायरेक्ट 9th को मिलता है। तो अगर आपको 9th 10th के लिए अगर जाना है तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सीबीएसई के नॉर्म से करना पड़ता है। सिर्फ प्राइमरी स्कूल अगर चलाना है तो फिर सिलेबस अपन अपना करिकुलम अलग से दे सकते हैं उसमें, और गवर्नमेंट का परमिशन से अपन शुरू कर सकते हैं, उसको सीबीएसई का एफिलिएशन नहीं लगता है। क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी संजय जी इसमें? प्राइमरी क्या क्या हमारा आउटले होगा, कैपिटल जो इन्वेस्ट करेंगे? तो उसमें कैसा है, 1 to 8 अगर स्कूल शुरू करना है तो भी फिर मिनिमम 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया तो लगता ही है। सो 20,000 स्क्वायर फीट के लिए एक 2.5 to 3 CR कम से कम उसके लिए बजट जाता है एक छोटे सिटीज में। बड़े सिटीज में तो बहुत ज्यादा रहता है बजट उसका, लेकिन छोटे सिटीज में 3 CR के अंदर आपका बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन लैब वगैरह जो डेवलप करना है, फर्नीचर्स डेवलप करना है, डिजिटलाइजेशन करना है, उसके लिए और ज्यादा पैसा उसके लिए लगता है। तो कम से कम फर्नीचर के लिए 1 CR और लैब डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपीज, ऐसा एक मिनिमम एक्सपेंसेस पकड़ के 5 CR तक अपना प्राइमरी स्कूल का सेटअप बहुत अच्छे से हो सकता है। या इतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो रेंटेड प्लेस लेके भी अपन जा सकते हैं, रेंट में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्लान चाहिए अच्छा, तो हमारा स्कूल जो है वो बहुत ही बेहतरीन स्कूल बनाया हुआ है हमने, और पूरा प्लान वगैरह भी हम आपको देंगे। हाँ जी, सॉरी इनका जहाँ पे अभी हमारी करंट लोकेशंस हैं, जैसे अहमदाबाद में कहाँ किन लोकेशंस पे चल रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स हम रन कर रहे हैं। आई ऑल्सो हैव वेरी interested participants who have joined, and I think some of them have also heard, seen, and they would like to discuss further also. तो मैं एक 1-on-1 मीटिंग है जो हम डिस्कवरी डे पे आपकी कराएंगे, पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमें को लगता है सबको हेल्प करेगा थोड़ा फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने में। एक तो हमारा कौन कौन सी फॉर्मेट्स में और किन लोकेशंस, अगर मैं सिर्फ गुजरात की बात करती हूँ, कहाँ कहाँ हमारे लोकेशंस पे भी अवेलेबल है? वहां पे जो एरिया है साबरमती में एक अपना शुरू हुआ है, पूरा उन्होंने फाइनल कर दिए थे, लेकिन अभी हुआ क्या है कि 2 साल 2.5 साल हो रहे अभी, पूरे स्कूल सभी प्री स्कूल कोई भी स्कूल चालू नहीं है। वो प्रॉब्लम है। पुणे में भी जो स्कूल शुरू हुए थे तो वो 3 स्कूल्स पुणे में फाइनल हुए, एक हिंजेवाड़ी में है, एक मोहम्मदवाड़ी में है, और तीसरा जो है वडगांव शेरी में है। तो ये 3 स्कूल्स पुणे में चालू है, एक अहमदाबाद में है, सॉरी पार्डन। हाँ जी सॉरी, आई थॉट यू वर डन, प्लीज कैरी ऑन। हाँ तो अभी कोविड की वजह से पूरा शटडाउन हुआ है पूरा इंडिया में, कहीं पे भी अभी प्री स्कूल शुरू नहीं है। अभी जो भी जिन्होंने फाइनल किए हैं अभी दे आर वर्किंग ऑन दैट, एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल में सब इंडिया के प्री स्कूल शुरू हो जाएंगे, और उस वक्त तक अगर शुरू करना है तो आज ही से अपने को काम को लगना पड़ता है। बिल्कुल संजय जी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी फ्रेंड्स, हमारी 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो प्री प्राइमरी है हमारा, एक हमारा K-12 का पूरा फॉर्मेट है, एंड क्योंकि एजुकेशन का जो हमारा पूरा इंडस्ट्री है, दिस इज अ सनराइज इंडस्ट्री। ये नहीं कि 1 साल 2 साल अगर कोई पेंडेमिक है, पीपल विल नॉट सेंड देयर स्टूडेंट्स आउट, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन की माइंडसेट से सोचना पड़ेगा हमें। 5 ईयर रूल हमेशा एजुकेशन में है जो वर्क करता है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट जो है आपके लॉन्गर जेस्टेशन है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग हराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, इंक्लूडिंग इवन K-12, जहाँ पे हर साल एक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करते हैं।
सो इसमें दो तरीके के फॉर्मेट्स हम देख सकते हैं, स्पेशली अगर हम K-12 की बात करते हैं या प्री स्कूल की बात करते हैं, जो संजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। हम ग्रीन फील्ड भी देख सकते हैं, जो एक नया प्रोजेक्ट है, शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसे भी हम प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे जहाँ पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्योंकि ना बहुत सारी अनऑर्गेनाइज चेन्स हैं जो इस टाइम पे शायद सस्टेन नहीं कर पाए। जितने भी चेन्स हैं जिनकी फाउंडेशन राइट थी, दे हैड द राइट स्टूडेंट बेस्ड, दे आर सस्टेनिंग इन दिस पीरियड। सो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होंगे जिनको आप कन्वर्ट करके आप K-12 या एक प्री स्कूल राइट कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे आपको एक तो आपका जेस्टेशन आपका कम होगा टाइम का, दूसरा लोकेशन आपको जो मिलती है अप्रूवल्स उस लोकेशन के ऑलरेडी इन प्लेस में होंगे। सो दिस इज समथिंग आई वुड आल्सो रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली। दूसरा, अगर हम K-12 की बात करते हैं, K-12 1 या 2 महीने की प्लानिंग से नहीं खुलता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एंड जैसे बिल्कुल संजय जी ने बताया था, बहुत सारे जितने भी लीडिंग इंडिया में K-12 कंपनीज हैं, दे स्टार्टेड देयर वर्क ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर राइट व्हेन द पैंडेमिक हैड स्टार्टेड। जहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुए थे, दे फाइनलाइज लोकेशंस, प्रॉपर्टीज। जो जेस्टेशन चाहिए होता है K-12 को, वो सारा का सारा जेस्टेशन आपका तकरीबन 1 साल का होता है पूरा सेटअप तैयार होने में। सो अगर आप K-12 में इंटरेस्टेड है, और एक सीजन होता है जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, ताकि टाइमली हम अपने सेंटर्स को लॉन्च कर सकें। सो संजय जी, क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में भी, एंड ओवरऑल बिजनेस, एंड यूर एक्सपीरियंस एजुकेटर, आई वुड आल्सो लाइक टू हैव लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग। जो हमारे ऑपरेटिंग हमारे खर्चे हैं, जैसे प्री स्कूल के हमारे खर्चे हो गए, ये टिपिकल हमारे क्या एक्सपेंसेस हमारे रहते हैं ओवरऑल। दूसरा, फी के ऊपर भी मैं क्वेश्चन लूंगी। आई सॉ क्वेश्चन विच केम फ्रॉम आई थिंक राकेश जी ने पूछा था, राकेश जोशी जी हैं। He also asked on the fee structure. So अगर आप थोड़ा बहुत explain कर सकें how competitive our fee structure is, क्या हम चार्ज करते हैं, and क्या हमारे overall हमारे operating expenses किस तरीके से होते हैं? या बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये फीस स्ट्रक्चर का जो है, हम लोग आपको जहाँ जो सिटी में आपको फ्रेंचाइजी शुरू करना है, स्कूल शुरू करना है, हम हमारी टीम पहले आपके एरिया में भेजते हैं। वहाँ के जो भी रनिंग स्कूल्स है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है उसका सर्वे करते हैं, अपने एक्सपेंसेस का सर्वे करते हैं, और कॉम्पेटिबल फीस स्ट्रक्चर आपको रिकमेंड करते हैं। कि ऐसा हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे के नहीं बताएंगे कि 50,000 रुपए फीस ले लो। वहां पे आप कौन से एरिया में शुरू कर रहे हो, वहां की सोसाइटी कैसी है, या क्रीम सोसाइटी है, या थोड़ी सी वर्कर्स जो है वो टाइप की सोसाइटी है, या वर्किंग क्लास ज्यादा है, या आईटी का क्लास ज्यादा है। अभी हिंजेवाड़ी की जो स्कूल है पुणे की, वो दैट इज अ क्रीम सोसाइटी। Means the surrounding area is very cream, and many IT people are working over there. They are earning in lakhs. So in that area, we can recommend higher fees. But if some labor class is there in that area, we have to think of all these social standards and social classes. So we can't exactly say that the fee structure should be this and this. So it is flexible, and we will take the investor also in the confidence. And definitely we will have some nice solution for fixing up the school fees. Sure. Usually in my school here, we are charging about 30,000 for my preschool students, and for first standard we are charging about 36,000 per year, and for 10th standard we are charging about 56,000 rupees per year for 10th standard. So this is our routine fee structure what we are offering to the students, because my city here is 3-tier city. Definitely, Sanjay ji. And कुछ questions और मैं लूंगी, मैं request करूंगी. We also have our senior regional head from Gujarat, Mr. Saurabh Pushp, friends, and he is somebody who's leading the project along with Sanjay ji on behalf of Franchise India. So Saurabh, I think I see some of questions roll out को लेके कुछ questions हैं, कौन-कौन सी locations पे हम जाना चाहते हैं. I'll request if you want to take these questions from the audience. And friends, I see some hands being raised. जो भी आपके questions हैं, please आप Q&A में अगर आप डालेंगे तो हमारे लिए easy होगा वहां से pick करना. So we can read that out for you. जी, एक दो locations में और लूंगी. I have a question on
from Mr. Sanjay Vanjara. He's asking if location जैसे आपकी भिलाद है, संजन है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में, ये लोकेशंस वाइबल रहेंगी हमारा ये मॉडल रन करने के लिए? कौन सी डिस्ट्रिक्ट? ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं संजय जी. वलसाड. हाँ जी. Okay. That is very nice place it is. Valsad is very developing place. Definitely there is a large scope to start a preschool over there. Even you can go for a CBSE school. One of my friend is also there from Valsad, Dr. Satyajit Ray. He is a physician and he used to work with me at Nanavati Hospital when I was a resident doctor over there at Mumbai. So he is also one of my good friend, and I know that place very well. So Valsad, you can definitely think of starting the school. And apart from this, कौन सी और priority locations कौन सी होंगी? अगर हम गुजरात या महाराष्ट्र की ओवरऑल बात करते हैं, कौन सी होंगी? And I'm also seeing प्रीति जी हैं from Ranchi. वो पूछना चाहती हैं, is Ranchi location currently in your rollout? अभी आप rollout देख रहे हैं उस location के लिए? Yeah. रांची के जो कुछ विजिटर्स है मेरे पास संडे के दिन यहाँ पे आ रहे हैं. मिस्टर बादल गोस्वामी, he is from Ranchi. So he is visiting my school, my premises here on Sunday, and he is going to start the school at Ranchi also. So he is specially coming to visit the school and see the campus and see the infrastructure. Mr. Badal Goswami. Sure, Sanjay. He already booked the ticket and he is arriving here on Sunday. That's helpful. There are many inquiries from all over India. तो हम पैन इंडिया किसी भी लोकेशन के लिए ओपन रहेंगे, बट गुजरात या वेस्ट इंडिया हमारी प्रायोरिटी रहेगा. इज दैट व्हाट वी आर सेइंग संजय जी? या गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, गोवा. So I am focusing on these states first because I am from Maharashtra. My academic director Lakshmi Annapurna, she is from Andhra and she is residing at Hyderabad only. So she can handle that state. I can handle this state. My team members are also one from Karnataka and one from Gujarat. So definitely we can handle this and we can able to give the nice services. Sure. And friends, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी. संजय जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बिकॉज ये बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म है, स्पेशली अगर आप K-12 देख रहे हैं या आप प्री स्कूल भी आप करना चाहते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उनके करंट फैसिलिटीज में आके देखिए, एक टूर कीजिए, जैसे एक इन्वेस्टर ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं. डेफिनेटली तो उससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है. यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द विजन ऑफ द कंपनी एंड लॉट ऑफ बाइंडिंग एंड एंगेजमेंट हैपेंस इन दीज टूर्स. सो इफ यू आर लुकिंग एट आवर टीम एट फ्रेंचाइज इंडिया विल ऑल्सो हेल्प यू फैसिलिटेट दीज एक्सपीरियंशियल टूर्स, जहाँ पे आप 1-2 दिन जरूर आप स्पेंड कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सारे फॉर्मेट्स को आप समझिए. एंड संजय जी डेफिनेटली मेरा हाँ जी, सॉरी संजय जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा स्कूल देखने के लिए महाराष्ट्र के बहुत सारे मिनिस्टर्स भी विजिट दे चुके हैं. क्योंकि अभी मैंने एक मिनिस्टर है अपने फूड एंड ड्रग मिनिस्टर मिस्टर राजेंद्र शिंगणे जी, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है. He is also coming to visit my school next week, and he is also interested in starting the CBSE school in his district. One ex-minister, Mr. Jayaprakash Dandegavkar, he is president of Sugar Federation of India, and he also finalized my school franchisee. He is already his construction is started at Hingoli district. So many educationalists and political leaders also are visiting the school. They are praising the school. They are more happy with the personal visits over here. So definitely I will tell everybody of you that don't go directly for the discussions. If you really wish to see, you are most welcome to visit my place. You can visit my school. You can see, you can have face-to-face discussion with me, and that will definitely increase the trust amongst us. So basically, I am not a businessman. I should
tell you frankly that I am not a businessman. I am a professionally doctor, gynecologist. So definitely I know that how education should be. And for that, I am in this business. That's all. Definitely, Sanjay ji, and this I would say lends a lot of credibility. And एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगी, unlike many other businesses, education एक business है जो आप कभी भी छोटे टाइम के लिए नहीं करते हैं. This is one business which you can even pass अपनी अगले वाली generation को भी आप pass on करते हैं. To the extent in school से शायद और more I should like to interrupt you that it is a noble business. Absolutely, very respectful. It is the service type of business it is, and definitely you will love this type of service when you are giving to the society, because being a doctor and being an educationalist, now I am more passionate in education field, and I love this education field more than my hospital field. So I am giving more time here for my kids here. I really love my kids, and they also are in too much attachment with me. Whenever I enter in my Curious Kids preschool, the students run on and I have to take them and hug them, everybody. So I really love that scene, and definitely I like to give such type of healthy atmosphere for education all over the India. Absolutely, Sanjay ji. It all reflects, I would say, the culture that you build in your company. And एक दो मैं quickly लूंगी. एक मुकेश जहाँ है वो पूछ रहे हैं रायपुर अगर open है कि नहीं. And दूसरा इनका जो क्वेश्चन है कि working capital की क्या requirement रहती है business में? If the Raipur is really a nice place, it is being a capital city. Definitely that is having a more potential for the school, and definitely the location, if it is good, then you can go for that location also. We will definitely come there for research work, and we will give you the nice suggestions also. If you have finalized the place over there, we will suggest you a few other places also if you wish. Sure. And इसमें working capital संजय जी क्या requirement रहती है अगर हम दोनों formats की? Actually speaking, the salary is the main expenses of any education institute, and at many places the trends of giving the fees is at the beginning of the school, and many places 50% fees is paid at the beginning and 50% fees is paid in the second semester. So that depends upon your your city's trends, how they are going. So you should have at least 2 months of salary of your staff members with you as a working capital, because many times the fees is not collected properly, and that time the teachers get disturbed with not getting the salary. So minimum 2 months salary, whatever it may be, it should be with you as working capital, plus a few lakhs for routine expenses like electricity bills, then water supply bills, and some other miscellaneous expenses also, you can say. So round about 20 lakh to 30 lakh rupees of working capital, I think it is sufficient to run a school smoothly for that particular academic year, because the fees is you can collect the fees regularly on monthly basis also, and that depends upon your skill and what type of discipline and the rules you are implementing in your school. That is also important. Absolutely, Sanjay ji. And एक आप बच्चों को किस तरह ये डिपेंड करता है कि आप बच्चों को किस तरह को डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उनका, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स कैसे होते हैं कि
on admission they take entire fees. So in that case, you need not bother about your expenses or capital, extra capital to keep with you at hand. So that will be easily available with the fees. And तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिसिप्लिन स्टूडेंट्स को लगाते हैं, ये एट स्टार्टिंग में फीस लेना चाहोगे या कुछ एग्जाम्पशन देना चाहते हो, वो it depends upon city to city and school to school. And एक कीरत जी है, he is from मोरबी. हाँ, तो कीरत जी मोरबी भी ओपन है. और बहुत सारे फाइनेंशियल ओपन है. Yeah. मोरबी भी ओपन है, राजकोट में भी मेरी बात चल रही है बहुत सारे लोगों से. मेरा एक बंदा वहां पे राजकोट में भी है, उनसे भी मैं मोरबी में उनसे मिलने के लिए बोल सकता हूँ. He can also go there and he can discuss with the Morbi person. So, yeah. That's very helpful. And friends, thank you so much. We have very interesting response that has come in today. And इसमें financial understanding काफी important है. I think we did take you through that, but it might require little bit of more detailed understanding at your end. तो ये सारी की सारी जो presentations हैं, whosoever is looking to go through this presentation, financial working expenses, इसके ऊपर पूरी ROI sheet क्रिएट की गई है. सो आप सब टीम मेंबर्स जो हमारे फ्रेंचाइजी इंडिया में काम कर रहे हैं, लेड बाय मिस्टर सौरभ पुष्प हु इज हेडिंग द प्रोजेक्ट, ये हमारी टीम्स आप सबको शेयर करेंगी. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी संजय जी आपसे, क्योंकि हम अभी क्लोज कर रहे हैं, कोई भी एक मैसेज आप सब लोगों को आप देना चाहते हैं. एंड फ्रेंड्स 10 फरवरी हमारा डिस्कवरी डे है. जो भी आपकी कॉल्स आप करना चाहते हैं, मीटिंग्स करना चाहते हैं, टूर अगर आप करना चाहते हैं, 10 फरवरी का दिन है. अगर कोई और ऑल्टरनेट डे है जहाँ पे अगर आप अवेलेबल है, आप प्लीज बताइएगा, वील ब्लॉक यू फॉर दैट डे. सो संजय जी एक मैसेज जो आप सब हमारे इन्वेस्टर्स को, पार्टिसिपेंट्स को देना चाहेंगे. मैं डेफिनेटली एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि एजुकेशन फील्ड में एंटर करो. बहुत ही अच्छा नोबल प्रोफेशन है और इसमें जो आपको समाधान जो मिलता है, बहुत ही बेहतरीन टाइप का समाधान मिलता है. आप एखाद्या होटल में कुछ इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, या एखादा कुछ दूसरा कुछ फ्रेंचाइजी लोगे उसमें इससे भी ज्यादा इनकम हो सकता है. लेकिन दिस बिजनेस रन्स बाय जनरेशंस टुगेदर. एंड अभी मेरे बेटे के लिए मैंने ये स्कूल शुरू किया था. मेरे बच्चे के साथ साथ यहाँ के जो सराउंडिंग एरिया है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट के भी मैक्सिमम बच्चों को उसका बेनिफिट हुआ है. और जब उनके चेहरे की खुशी आप देखोगे कि मेरे स्कूल की वजह से उनका लाइफ कैसा चेंज हो गया, मेरे कॉलेज की वजह से उनका लाइफ कैसा चेंज हो गया, तो ये आप किसी पैसे से ये इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो. ये जो आनंद देता है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का आनंद रहता है. और इसमें आनंद भी है और पैसा भी मिलता है. अभी शुरू में एकदम स्टार्टिंग में प्रॉफिट शुरू होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है, इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करके रखा है, तो उसके बाद में आपको रेगुलर एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं रहते हैं. तो डेफिनेटली राइट नाउ आई एम ऑल्सो अर्निंग इन करोड्स, बट ये एजुकेशन बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस ऐसा बता नहीं सकते हैं. ये भी मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, क्योंकि ये एनजीओ के अंतर्गत करना पड़ता है और कंपनीज के अंतर्गत करना पड़ता है. तो कंपनीज जो रजिस्टर करनी पड़ती है, नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी बोल के इन्वेस्ट करना पड़ता है. और कंपनी के जरिए अगर आप ये करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा. एंड फ्रेंड्स, संजय जी आपको पूरा क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या हमारी गाइडलाइंस हैं, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, संजय जी की पूरी टीम आपको हेल्प करेगी वो सारा गाइड करने में. एंड आई विल रिपीट अगेन, 10th फरवरी ये हमारा डिस्कवरी डे. ऑल ऑफ यू हु वांट टू कम ऑन अ कॉल, मीटिंग, एक्सपीरियंस, विजिट द सेंटर, प्लीज रीच आउट टू द फ्रेंचाइज इंडिया टीम and we'll help you get these meetings organized. And before we close, Ashna, I'll request if you can take over for your concluding remarks. So thank you so much, Sanjay ji. Thank you so much, Sonia ma'am. Thanks all the dear participants for joining in today. Sanjay sir, can I request you to please remove your screen?
So thank you so much, all the dear friends, for coming on this particular webinar. Please do connect with us at our business hotline number, which is 9717683838. Yeah, thank you so much, sir. I'll just share my screen. Also write to us at feedback@franchiseindia.in to book your slot for 10th of February. You can connect with on both these numbers as well as on the email ID. Do share your suggestion and feedback with us at the different social handles. In case you wish to join management team of Franchise India on their LinkedIn platform to understand more services and association from our side, you can do so. We have just shared this information on the screen. On Sunday, we want to invite you for our Bharat Franchise Show. Bharat Franchise Show is a specifically designed show. It's a 2-hour webinar show for you, where you have chance to digitally interact with top 6 brands. The top management of these companies will come and talk about their business model. Do registration with us. Registration can be done either by connecting with us, sending message at our business hotline number, or connect with us at our Facebook page. Thank you so much once again for joining today. Have a very safe day. Thank you so much. Thank you. Thank you, friends. Good day. Thank you. Thank you. Thank you.